Health Education Lecture Series. All listeners of Health Education Lecture Series, I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My clinic address is 9701 Sarah and Court, Dublin, California, 94568. And my phone number is 408-687-1899. And sorry, I'm here to deliver another lecture of Health Education Lecture Series, and we are discussing the diseases of the children's. Newborn children's, what are the main diseases which they may suffer, and we have to eradicate those diseases, and what we can do for that. And in this series, we have already discussed hepatitis and diphtheria. Yesterday, we were discussing in Punjabi and Hindi program about diphtheria, but perhaps yesterday I could not continue in English. So I would like for those people who can just listen in English program and can understand in English. I'm just repeating some of the facts about diphtheria disease so that they can understand easily with those who cannot understand Punjabi or those who cannot understand Hindi. So diphtheria was a disease which is caused by chorionic bacterium diphtheria. It's the name of that diphtheria bacillus by which this disease is caused. And the most important symptoms for this disease are basically starts with simple flu type of symptoms. Generally, we sometimes ignore all these things, that these are simple things, just like sneezing, what it chars, short cough, and all these things. These are the most common things which we just find out. I think this is still darkness, and I want to clear this thing, this darkness.
No, light is not. There are. So, sorry for the interruption of the light. So, we were discussing about the diphtheria in children's, and we have discussed in Punjabi and also in Hindi, but we could not continue it in English. So, let's discuss this diphtheria in English. So, diphtheria bacteria, Corynebacterium diphtheria, I have already discussed about that this is the causative bacteria which can cause diphtheria in a newborn as well. Most dangerous age is within 1 to 5 years, and where this may happen in a newborn children's. And we have discussed that the initial symptoms are similar to that of flu. Flu means these are similar that having sneezing, cough, cold, watery discharge from the nose. All these symptoms are the initial symptoms which appears in the initial stage of the diphtheria. But yes, in the adults, sometimes we can ignore these symptoms. But when there is a question of newborn, we should not ignore all these symptoms because all these symptoms are very serious in case of children's. So if they happen to in these children's immediately, we should not wait for and immediately we should go to the doctor. We should consult the physicians so that he can take care it properly and if they can check it. Even the lab test, they can check it if there be any diphtheria bacteria which is causing all these flu type of symptoms. Because ultimately, if it is the diphtheria, it may be serious anytime and it is very difficult to control because most of the children's, even 5 to 10% children's die because of the diphtheria because it blocks the respiratory passages throat from the throat it blocks the respiratory passages and as you know the food and oxygen is supplied through the mouth oropharyngeal junctions from where the larynx tube is passing and from where the pharynx tube is passing and if that area is blocked definitely it blocks the air passages and it's very difficult. Yes, without food someone can survive for a longer period, for a short period, for a limited periods, but
without oxygen, it's very difficult to survive. In this way, we should consider it as a serious disease, especially in the children's. Though patients, even in the old age, when it happens, they die. So, in this way, we should consider it serious when we are discussing about the diphtheria in children. So, after these simple flu symptoms, sore throat is also considered along with that. But child, the newborn cannot tell that he is having sore throat. We have to assume it when he is having short cough, dry cough, and difficulty in coughing because throat time to time is blocking that area. And then even if you check the mouth, you will see there is a green color of mucus in the throat which is blocking the whole oral cavity, whole that area which goes downward into the stomach and also into the lungs, means from where the pharynx and the larynx are passing and going into the back of the nose. So if that area is blocked, definitely they are pressing the air passages, they are pressing the pipes, and it is very difficult to survive. In this way, simple throat is not a problem, but throat because of the diphtheria is a difficult thing to be tackled with. So, breathing difficulty with low grade fever, remember, sore and yellow spots. Sore and yellow spots all over the skin. You can see that these are the external manifestations of diphtheria. Though this diphtheria is mainly concerned with the throat, but outwardly it express the yellow type of spots all over the skin from which we can judge, because many of the diseases we can judge that if many of the diseases we can judge from the outwardly expression on the skin, on the face. The same way, there is a puffiness in the face, there is a enlargement of the neck. It's called as bull neck, just like bull have bigger neck, heavy neck. The same way, the newborn child and even the old person who is having diphtheria, they are having swelled up neck. Yeah, remember, there are some other diseases just like enlarged tonsils, parotid glands enlargement, you can say, and they also have this. And then the mumps, we will discuss later about the mumps. Mumps are also, they enlarge the neck, but they enlarge the neck from one side then the other side. This is the sequence of appearing of the neck, that when first of all it swells up under the ear on one side, and then it develops on the other side, and then it becomes bull neck. But in diphtheria, directly both sides, but from the inside the oral cavity, both sides are involved, and they swell up. The swelling shows back outwardly, and it shows bull neck, yellow spot, sore throat, breathing difficulties, and mostly from newborn to 5 years of age. It's a very serious age for the diphtheria. So we should be careful at this age. And also, we have discussed that this diphtheria may be caused from the cats and from the dogs. So if ever you are having cat or dogs, and is there any newborn child, please take preventions of that one. They should not come near the child, near those newborn children, because there is possibility, susceptibility of the diphtheria to come from the cats and the dogs, and they may suffer. They may cause diphtheria to the newborn children.
Mostly, as we know, it's a contagious disease. And all the contagious disease spread because of, if you are using the clothes, hankies, towels, all other things which are used by the infected persons. And if they are used by the healthy person, yes, bacteria can travel from one to the other and may cause this diphtheria type of things in the healthy persons. So be careful that if ever you are having, it's not only that if a person is having diphtheria and you should take precautions, but for the newborns, I'm telling you, for the newborns, if you are coming from outside, you do not know that the person you are dealing with in the outside from home, they may have diphtherial bacillus in their body, and but they are not expressing symptoms at that time, but even then they are contagious. They are contagious at that time, and you are interacting with those persons. And when after interacting with any person who was having during the incubation periods of the disease, and then you come home, and at your home, if someone is a newborn, there is a liability of the more susceptibility or to have a disease. So therefore, be careful. Yeah, because when there is a newborn children's in any home, all the relatives, maternal relatives, paternal relatives, all they accumulate to see him, to hug him, to kiss him. So please be careful not to hug, not to kiss him, especially if you are coming from outside, especially if you are coming from a crowd, if you are coming from traveling in air traveling or by bus, because you are in a crowd and you do not know that in the company of those people who you are traveling with, they may have any diphtherial infection in their body, and they may have the incubation periods, they may not having the actual spread of symptoms at that time, but even then they are contagious. And you have interacted with those people, it means you may be the carrier of the disease. And if you are a carrier, you do not know at that time, because you do not have any symptom. You do not have any symptoms, and you may be the carrier of the disease. And at that time, if you go near the newborn children's, yes, they can be infected with that one. So therefore be careful, even if it's your own child, and if you are coming from traveling in by air or by bus, do not go directly to your child. Do not hug him, and also do not touch the clothings. Care, take care if you are having animals at home, cats, dogs. Children are very susceptible to catch infections from those animals, and they are mostly the carrier of the diphtherial problems. Therefore, be careful that if you have any animals like dog and cats at home, prevent them and let them stay away from the children's room, so that your child should be safe from this one. So in this way you should be careful about this one, that this disease should not spread from your animals and even from you, especially if you are coming from crowd. So what are the other symptoms? These are the simple symptoms I have told you. Flu type symptoms, and which we mostly ignore. Everybody ignores that because it's a flu type symptom. When flu was started in the initial stage, it was also very contagious. It is contagious now, but it was very serious at that time. And people were dying with this influenza, just like people died in COVID 19. Okay? And millions,
The same way, the same thing was happened for the flu disease when it was initially started. But ultimately, our body and our immunity developed automatically inside our body, and we have frequently symptoms of flu, but we do not die. But we do not die unless it has progressed to the extreme that we are having pneumonia and all that things, and we are having old age. Yes, in that case you can die even from the flu symptoms. But here I am telling about the diphtheria, and especially I am telling about the newborn diphtheria, that you, even if there are flu type symptoms to your child, you should not ignore that. You should not ignore that, because it may be you do not know about that. It has not been tested. You do not know about that one, that he is having a diphtheриal infection, and this sore throat, breathing difficulty, low grade fever, yellow skin spots all over. Plus, these symptoms are complicated with excessive palpitations. And I have told you about the palpitations, that when a child is newborn, his palpitation rate, his rate of heart palpitation is 140 at the time of birth. But gradually it comes down. It comes down gradually, and it comes to the normal as we are having 72 to 80 per minute our heartbeat. The same way, but at that time it is 140. So do not consider if he is having 130 or 120 or something like that more than normal. But if in a newborn the palpitation rate exceeds more than 40, and it is considered up to 160, it's a serious condition at that time. Even in a mother's womb, if the palpitation goes up to 160 heartbeat, if we check it in the mother's abdomen, if it is 160, and anytime 160, even in the mother's womb or even outside, it's a serious condition. There may be strangulation of the umbilical cord or anything else. But now we are talking that he is outside, he born now. After birth, the heartbeat at the time of at the time of birth is 140, considered to be the normal. But if at that time, after third or fourth, mostly these symptoms what I'm telling you about, the flu symptoms and the sore throat, breathing difficulties, low grade fever, all these things mostly happens after third or fourth day to the children. If if it has been infected by any source of infections. Just like I told you, you may be the carrier. Your other dearest and nearest who are coming to see the children may be the carrier at that time. Your cat and dogs may be the carriers at that time. So, if ever he got all these things, this palpitations may increase more than 150. It's not low grade fevers, it's a more than 150. And you have to take care of this one, because it is concerned with your respirations. I repeated many a times, a child can survive without food. Even we people can survive without food for a longer time. Just like you know about Darshan Singh Perumal, he survived about 81 days, and without food. We can, but we cannot survive without oxygen more than 3 to 5 hours. Sorry, minutes, not hours, minutes. If the respiration is blocked for 3 to 5 minutes completely, then the oxygen in the tissue spaces is exhausted, and all the tissue spaces go in unconscious stage, and ultimately it's very difficult to revise them, and death comes. But now we are talking about the children's, newborn children's, and we are talking about the disease which is directly concerned with the respiratory and food pipes, and that's very serious condition. Therefore, we are not to ignore even the simple flu symptoms in a child. And the serious thing, in case if you feel that there are lymph nodes, I have explained many times about the lymph nodes
in these lectures that when blood goes from the heart to the cells, it supplies food and oxygen to each and every cell of the body, trillions of cells. And when the blood comes back to the heart from each and every cell, it collects the garbage from that cell and also the deoxygenated blood it has used. And in this way, suppose if any cell is sick by whatever may be the disease, if any cell is sick and producing more than normal garbage, excessive garbage is coming up in the backward flow of the blood, then it may blocked somewhere. It makes thickness. It it causes thickness in the blood, and blood is not flowing in a normal speed. Therefore, the nature has established a new system that is called lymph system, and that lymph system filters the toxins from the backgoing blood and collect it in a different channel, and that is known as lymph channels. And even the lymph channels, they may fill up, they may fill up, and they may be blocked over there. Ultimately they become tense and hard ball like swellings in the inguinal area, in the neck area, in the axillary areas, and ultimately it becomes a serious indication for any disease, not only the diphtheria, but it may become serious. Even if you have an injury on your feet or on your hand, and sometimes you have lymph swelling in the axilla, lymph swelling in the inguinal things, and if these things are not cured time in timely fashions, they are increased. And if they are increased under those conditions, under those conditions, it may become serious, and this infection of the lymph nodes will travel in the lymph cycles, go to the spleen. But if spleens cannot cure it, cannot filter it into the normal conditions, ultimately it goes into the thymus gland. And ultimately, if the thymus gland could not filter or could not clean up the blood, ultimately deaths come. Similarly, the same condition happens in the cancer stage. And I'm talking about any infection, any disease, anywhere inside the body, which is producing excess garbage and is coming back in the back going blood, is separated in the lymph channels by the nature. That's the lymph systems, and it is collected. Basically, the lymph system itself is a lymphoid system. Lymphoid system means a type of WBC type. Our WBC type, WBCs are our protective forces. There are many different cells, neutrophil, basophil, eosinophil, monocytes. They have their different quality to control or to survive or to control the infections. Means same way these lymph glands and lymph channel is made up of that lymphoid system. Lymphoid cells means they itself has the capacity to filter the toxin of the blood. They has the capacity to clean the blood and send it back to the system. But if it is increased in quantity, increased beyond their capacity to clean it, ultimately that goes to the spleen. And if the spleen could not do that, could not clean that, it goes to the further sources. So, but I'm talking about this diphtheria disease of the newborns, even in adults. Lymph channels is blocked, lymph glands are blocked, and this is the serious indications which appears after 2 or 3 days. It means simple flu symptoms should be taken care of and should be treated at the same times, maybe with the children or maybe with the adults, because this diphtheria mostly is serious also after 60 years of age. From 1 to 5 years of age for the children's, diphtheria is a serious condition.
From 60 and above that one, this diphtheria is a serious condition. Therefore, our medical science has developed the vaccinations to protect all these things. And it is advised that the mother should be vaccinated, so that when a child is born, he should be having some immunity to be protected from the diphtheria. And ultimately, it is recommended that a newborn within the 2 years or 2 months of age, within 2 months of age, he should be vaccinated for the DAP, diphtheria, tetanus, and pertussis. This is the combination of injections, because all the three all the three diseases I will discuss one by one: diphtheria, tetanus, and pertussis, means whooping cough. All the three diseases have spasmodic conditions, spasmodic constrictions, spasmodic type of things happen in all of the body, whereas this diphtheria produces this type of condition in the throat. And that throat in yes, tetanus has throat symptoms, whooping cough has throat symptoms, diphtheria has throat symptoms, but we can identify them what it is, because there are some different signs for the all these diseases. I will discuss those symptoms of the tetanus and those symptoms of the whooping cough later on. But today we are discussing about this diphtheria. That diphtheria has a jelly-like mucus in the throat, and the color of this jelly is a green. It is not only in the throat, but whenever you have any wound, any infection, even in the ear, even in the eyes, even in the urinary tract, wherever you have a green type of, even sputum, excess sputum, flame coming from the lungs. If it is of green color, the normal color is whitish yellow. After that, it becomes yellowish. After that, it becomes again white and cleaned up. But if any infection, any discharge from any part of the body becomes green, it indicates serious conditions. And I'm talking about the diphtheria, that it has since very beginning. It's a it's a malady, it's a disease of that nature, that it becomes very serious very fast. Therefore, whenever we have these symptoms and we inspect the throat, we see a jelly like green mucus inside the throat, which is blocking the whole oral cavity, and it's pressing backward the larynx, respiratory organs, and the pharynx, which is supplying food inside. So, when the respiratory organs are blocked, especially the larynx, it goes up to the base of the back side of the nose. That's known as the nasopharynx and nasolarynx. That laryngeal portion, if it's blocked with that mucus or with the swelling of the glands, because that swelling inside block the oral cavity and also the outside. That is why we say the outwardly, this diphtheria has bull neck, swelling of the neck high, more than normal, and inside throat is closed with the mucus of green color. These are very serious conditions. But nowadays, if timely you have gone to the hospitals, there are systems that doctor nowadays attempt tracheotomy. They just cut the throat and put a pipe over there and supply the oxygen, so that oxygen should continue and the child should survive. And the second thing, I told you about the all viral diseases or all this kind of diseases mostly have their period of 3 weeks. Incubation period 1 to 4 days, and its course 3 weeks, 21 days. In the 21 days, either they are resolved, cured, or they become serious, a person may die.
So within that period, we have to take effective measures to combat this disease. And in the hospitals, so that the child should survive, should not strive for oxygen. That's why tracheotomy is done, and a pipe is fit into the neck, and oxygen is supplied from the outside so that the child can survive. So these are the serious type of conditions, measures. So should not go child to that extent. Therefore, we recommend that if ever he is having any flu type symptoms, immediately rush to the doctors. Immediately go to the doctors, and for all and every, as a precaution, do not use any clothing of the infected person. Do not use your own clothes for your child, because you are coming from outside and you do not know to whom you have talked to, and whom you have to activate. So this, therefore, this infection may come from outside to your children. So even it is your children, your child, you should have to take precautions about that one. In case of old persons, yes, definitely do not use his towel, his hankies, his other things which are used by him by the other persons, so that he should not spread this infection anyway. So after that, we this complication. If we talk about the complications, the first thing is the lymph nodes. Lymph nodes are swelled up. Second, the nervous system. Nervous system is paralyzed, and just like tetanus, we will talk about the tetanus, but in this diphtheria disease, if it dwells, nervous system is also paralyzed. And when it is paralyzed, means all the systems are paralyzed. Mostly when the respiratory system is paralyzed, nerves are not controlling the larynx spasms, then child may die, or anybody can die. So you have to take care of all these things seriously when there is a flu type of symptoms. And it has learned now that 5 to 10% cases, even in the developed countries, if a newborn child has diphtheria, they die, because we are unable to provide immediate management, immediate management in the hospitals, and in between that period the child dies. Therefore, take it serious. And whenever you have these yellow spots on the skin, whenever you see a short cough, whenever you see a sore throat, short cough of the children's, and with the cough, there is a one difference. When you cough in a whooping cough, the face become red. When you cough, a child coughs with diphtheria, it becomes yellow. This is a difference of the symptoms that you can analyze. You can separate these two things from the face even. But God bless you, not to go that far. But whenever a child, newborn child especially, is having flu-type symptoms, rush to the hospital. But in a routine, you have to give the vaccinations. The second injection, the first injection was the hepatitis injection, the hepatitis B, which was advised should be given within 24 hours of the birth. And after that, this DTAP, diphtheria, tetanus, pertussis, should be given within the second month of the birth. And after that, after every 2 months, three successive doses of the vaccinations should be given to a newborn children. And after that, a boost dose, when a child becomes about 1.5 years old, should be given. Before that, basically, but it is right that before that we should give it, so that our child should not suffer from all these things. And the same type of care should be taken for the old person, because after 60 years of age, it's also serious for the old persons. So today our time is over for this English lectures, and we will come to the Hindi lectures. Perhaps today is the Hindi times, and we will deliver another lecture regarding the tetanus.
today is the time for the tetanus lecture, but because we could not deliver this English lecture for the diphtheria, so we took this time for that one. So, God bless you all. This is Gurdeep Singh Sandhu. ये मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सैरा एंड कोट, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो ये फ्री है। किसी भी वक्त आप कॉल करके अपना सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। और अगर किसी बीमारी का इलाज करवाते हुए आप टायर्ड हैं किसी भी उम्र में, तो कॉल कर सकते हैं। होम्योपैथिक जो साइंटिफिक अप्रोच है हेल्थ में, जिसका एक एक्सप्लेनेशन है, जिसकी एक लॉजिक है, क्योंकि बहुत से ट्रीटमेंट्स हम लोग करवाते हैं ना, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। और जो प्रिंसिपल्स हन और जो लॉजिकली प्रूव्ड हन, अगर उनके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो यस, वी सर्वाइव एंड वी क्योर्ड वेरी फास्ट। इसलिए होम्योपैथिक इस टाइप का ट्रीटमेंट है कि ये आपकी बीमारी को रूट आउट करता है। बिकॉज ये जो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट है, विद विच हम लोग आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी इस काबिल होती है कि आप इसको कंट्रोल कर पाएँ, जो भी इन्फेक्शन आ रहा है उसको कंट्रोल कर पाएँ। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपने किसी कारपेंटर को, किसी मिस्त्री को, किसी जानने वाले को बुलाया, वो आएगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है, तुम हट जाओ, मैं ये आपकी बात ठीक कर देता हूँ, और वो करेगा, करके चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वही प्रॉब्लम फिर दोबारा आएगी, तो फिर दोबारा आप उसको बुलाएँगे। तो बार-बार ये चलन चलता रहता है। मेडिकल साइंस में ये आप देखते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है कि वो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ इस तरह की दवाइयाँ देते हैं, जो प्रेज़ेंट सिम्पटम होते हैं, वो दब जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्योंकि ये लाइफ़ है ना, ये एक्टिव ससेप्टिबिलिटी इसके है पास है, और इसलिए अल्टीमेटली जितनी भी इसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खुद ब खुद उसको ठीक करने की कोशिश करता है। बीमारियाँ जितनी भी हैं, वो टाइमली फैशन से हैं, उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उनका एक ड्यूरेशन है। बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे पैरासाइट्स हो, इनका अपना एक समय है, और उस समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और तब तक अगर आपकी वाइटैलिटी ने उसका मुकाबला कर दिया, तो वो वैसे भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपने जिस कॉज़ेटिव फैक्टर से कोई बीमारी ठीक हुई है, पैदा हुई है, उसको अगर हटा दिया, तो अल्टीमेट आपके शरीर की आपकी इम्यूनिटी उसको कवर कर लेगी, और आप हेल्दी हो जाएँगे, तंदुरुस्त हो जाएँगे। लेकिन लेकिन अगर कॉज़ेटिव फैक्टर हमेशा साथ में लगा हुआ है, जिस चीज़ से कोई बीमारी पैदा हुई है, वो कॉज़ेटिव फैक्टर जब तक आप नहीं समझते, जब तक आप उसको हटा नहीं सकते, तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाते, सिस्टम चाहे जो मर्ज़ी अपनाओ। सिस्टम आपका चाहे जो मर्ज़ी हो। तो ये सबसे पहले किसी भी मेडिकल साइंस में, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, किसी भी साइंस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये समझें कि किसी भी बीमारी के पीछे उसके कॉज़ेटिव फैक्टर क्या हैं, और वो कॉज़ेटिव फैक्टर अगर हम आगे से दूर करने के योग्य हो पाए, तो अल्टीमेटली 2 फैक्टर, एक तो आपकी दवाई, दूसरा शरीर की अपनी इम्यूनिटी, 2 चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके लिए, एंड और आप बहुत जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएँगे। और होम्योपैथिक सिस्टम क्या करता है? पहली बात कॉज़ेटिव फैक्टर को जानना और उनको रिमूव। क्या आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बोलते हैं, "डॉक्टर साहब परहेज़ क्या करेंगे?" जब आप ये बोलते हो परहेज़ क्या करेंगे? क्योंकि बीमारियाँ जितनी भी पैदा होती हैं ना, बदपरहेज़ी से पैदा होती हैं। इस शरीर के चलन के साथ, रूटीन के साथ हम नहीं चल पाते, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो इस शरीर को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कोई बीमारी पैदा होती है। उसी से बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसी से जरासीम पैदा होते हैं, उसी से पैरासाइट्स पैदा होते हैं। हमारे खान-पान, रहन-सहन, इसकी वजह से
हमारे रहने का ढंग तरीका, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे खाने का ढंग तरीका, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम करेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली जो इन्फेक्शन है, इसकी बात हम सेकेंडरी आपसे कर चुके हैं कि हर बीमारी का, हर इन्फेक्शन का अपना एक पीरियड है और उसका पीछे से सप्लाई लाइन आपने बंद कर दी। पीछे से सप्लाई लाइन आपने बंद कर दी और आपकी वाइटलिटी, आप जो उपराला कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जब वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। और होम्योपैथिक सिद्धांत जो है वो यही करता है। जैसे मैंने आपकी अभी एग्जांपल दी ना कि आप किसी मिस्त्री को बुलाते हो, वो हट जाओ पासे मैं कर देता हूँ, बार बार उसको बुलाएंगे। लेकिन होम्योपैथिक सिद्धांत का जो असूल है, वो असूल ही ये है कि सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। कैसे होगी? आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो दिया जाए, और जो दिया जाए वो उतना ही दिया जाए जितनी आपकी ज़रूरत है। कमज़ोर आदमी को घी ही ज़्यादा दे दो तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए होम्योपैथिक में वो पोटेंसी सिस्टम जो है ना, कि आपको कितनी चाहिए, कौन-सी पोटेंसी चाहिए, किस तरह की बीमारी के लिए, किस तरह के सिम्पटम्स के लिए कौन-सी पोटेंसी आपको देनी होगी और कितनी देनी होगी, उसके हिसाब से हम बीमारी को कम्बैट करते हैं। इम्यूनिटी ऑटोमेटिकल उस बीमारी से, एक तो दवाई से फ्री हो गई, दूसरी उसका अपना टाइम पीरियड है, उसका पीछे से सोर्स हमने बंद कर दिया कि जिसकी वजह, अगर पानी की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज है तो हमने पानी की प्योरिटी कर दी। अगर आपकी खुराक से कोई चीज जा रही है तो खुराक की हमने प्योरिटी, परहेज, प्रिकॉशन बता दिए। अगर इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट से हम समझते हैं बीमारी आई है, तो इन्वायरमेंट के लिए जितने भी प्रिकॉशन, डॉक्टर नहीं बोलते कि भाई आपको तो पहाड़ों में जाना चाहिए, आपको यहाँ रहते हैं ना आप, वहाँ से बदलना चाहिए। ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हाँ, आपकी बीमारी के पीछे जो कारण होते हैं, वो इनसे संबंधित होते हैं, रहन-सहन, खान-पान से और आबो-हवा से, जिसमें आप रह रहे हैं, वो बीमारियाँ पैदा करता है। उससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, इसीलिए कोई ना कोई बीमारी आपके पास आ जाती है और उसी हालात से वो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं। और अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी कोई बैक्टीरिया आप पे इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सोर्स आपने हटा दिया। जब सोर्स हटा दिया तो ऑटोमेटिकली उसका एक लिमिटेड स्कोप है, उसकी लिमिटेड एक लाइफ है, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग होम्योपैथिक में ज़्यादातर जो ध्यान इस बात पर देते हैं कि इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। बीमारी को, उसके कॉज़ेटिव फैक्टर को समझकर उसको एडवाइस किया जाए, उसको हटाया जाए। उसको हटाने के बाद फिर उसके बाद आपकी जो दवाई है, उस पेशेंट की इम्यूनिटी को डेवलप करेगी, उसको हेल्प करेगी। ठीक है? सो आज का ये हमारा जो लेक्चर है, वो आज का टेटनस का था, क्योंकि हम लोग जीवन से जीवन की उत्पत्ति की एक लड़ीवार कथा आपके सामने पेश कर रहे हैं। जीवन पैदा कैसे हुआ था, स्पर्म और ओवम से कैसे चला था, कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे-कैसे कोई सामने इतनी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई, माँ के पेट में क्यों-क्यों सी प्रॉब्लम आई, कब-कब प्रॉब्लम्स आई, उसका हल क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी डेवलपमेंट बॉडी कैसे बनी, एक-एक अंग कैसे बना, कब-कब बना, कब-कब वो काम करने योग्य हुआ, और जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी कैसे-कैसे हुई, उसकी क्या स्टेजेस थी, और कैसे-कैसे हम जान सकते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल समा जा रहा है, या इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये सब मैंने सिस्टमैटिक वन बाय वन सभी लेक्चरों में आपके सामने रखा, और फिर हम यहाँ पर पहुँचे थे कि भई बच्चे की डिलीवरी होगी 280 डेज़ के बाद, स्पर्म ओवम से चली हुई बात। हालाँकि मैंने स्पर्म के बारे में भी डिटेल बताई थी, कैसे पैदा होता है और कब-कब पैदा होता है, और इसी तरह स्पर्म की बात भी बताई थी कि कैसे पैदा होता है, कितनी क्वांटिटी में पैदा होता है और कैसे-कैसे मरता है, कहाँ पर कैसे-कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को बताई दी थी। और ये सब चलते हुए उसके बाद हम इस चैप्टर पर यहाँ पर पहुँचे हैं कि पैदा होने के बाद नए जन्म को कौन-कौन सी दुश्वारियाँ, कौन-कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं,
और उनका सिस्टमैटिक आपके सामने वेरवा में पेश कर रहा हूँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मेरी कोशिश ये है कि वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ जो आप लोग सब समझते हो। कई बार मुझे लफ्ज़ ढूँढने पड़ते हैं दिमाग में कि ईज़ीएस्ट वर्ड क्या हो सकता है? मेडिकल टेक्निकल वर्ड जो है ना, वो मैं नहीं यूज़ करता। कोशिश यही होती है कि मेडिकल के टेक्निकल वर्ड मैं ना यूज़ करूँ और उसके लिए कुछ ऐसा वर्ड रूटीन में मैं देखूँ जो आप सब लोग समझ पाते हो। तो इसी सिलसिले में चलते हुए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बच्चे की टेक केयर, बच्चे की इंस्पेक्शन के बारे में बताया। क्या-क्या हमें उस वक़्त पैदा जब बच्चा होता है तो चेक करना होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे काटना होता है, क्या-क्या उसमें हो सकता है, उसके बाद कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्या-क्या चीज़ें बच्चे के शरीर में हमें चेक करनी होगी। उसके बाद वैक्सीनेशन की बात आई थी कि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बच्चे को पैदा होते जानलेवा साबित होती हैं। या कुछ एक बीमारियाँ न्यूबॉर्न बच्चे को आ जाती हैं जिससे बच्चे पहले बहुत ज़्यादा मर जाते थे। और उन सबको बचाने के लिए मेडिकल साइंस ने जितनी खोज की और ये देखा कि ये बीमारी जो है नए जन्मे बच्चे में सीरियस हो सकती है। और अगर ये सीरियस हो सकती है तो फिर इसका कुछ ना कुछ प्रबंध, क्योंकि बच्चा जो माँ से इम्यूनिटी लेकर आता है ना, जो ताकत लेकर आता है वो बहुत कम होती है। और वो उतने उस पेट में रहते हुए वो सफिशिएंट है। पेट में रहते हुए उसके सर्वाइवल के लिए वो सफिशिएंट थी। लेकिन यहाँ आया बेचारा बाहर तो खुराक भी बदल गई। पहले तो माँ सब कुछ करके भेज रही थी। अब वो खुराक भी बदल गई। अब एनवायरनमेंट भी बदल गया है। पहले बने-बनाए विटामिन्स, बने-बनाए मिनरल्स, बना-बनाया सब कुछ जो चाहिए था डेवलपमेंट के लिए वो माँ बना रही थी, कर रही थी। और एक्सक्रीशन, सिक्रीशन जितने भी थे बाहर जाने वाले चीज़ें थी, वो भी माँ ब्लड के ज़रिए कर रही थी। अब सारा कुछ इसको नया करना है। और ये मैंने आपको बताया था कि अंग पूरे बच्चे के 20 हफ्ते में बन जाते हैं। 32 वीक में वो काम करने के योग्य कंप्लीट हो जाते हैं और 37 वीक्स में वो काम कर सकते हैं। इवन 32 वीक के बाद भी बोलते हैं ना कि 7वाँ बच्चा पैदा हुआ है और 8वाँ बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह के हालातों में ठीक है, उनको इंक्यूबेशन पीरियड में रखना पड़ता है क्योंकि वो अंग अभी लर्न्ड नहीं कर पाए पूरी तरह, वो नहीं सीख पाए काम करना। तब तक हम इंक्यूबेशन पीरियड में उसको रखते हैं, लेकिन उसके बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि माँ से अलग वो जिंदा रह पाए। और इस हालात से उसके बाद आगे इसके सामने जो दुश्वारियाँ आई, वो बीमारियों की थी। एनवायरनमेंट की बीमारियाँ थी, खुराक के हिसाब से बीमारियाँ थी। ये सब चीज़ें हम अब डिस्कस करते आ रहे हैं। तो पहली बीमारी मैंने जो लिवर के बारे में आप सब लोगों को बताया था कि कैसे माँ का खून अब टूटना शुरू हुआ और माँ के खून से टूटते-टूटते नया खून बनना भी शुरू हुआ और नया खून बनेगा नई खुराक से। वो अभी लर्न किया नहीं उसने, अभी उसमें कमी-पेशी है, उतना नहीं कर पाता जितनी ज़रूरत है। अगर जितनी ज़रूरत है और हर एक सेल की, हमारी मौत तो निश्चित ही है ना। ज़िंदा रहने का प्रकोप जो है वो अलग बात है, लेकिन मौत तो निश्चित होनी ही है। सेल की लाइफ़ जो है, वो 120 दिन है। और इस सेल को रूटीन में टूटना ही है। जैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, हर 6 साल बाद वो कुछ बदल जाते हैं, फिर नए 6 साल बाद आते हैं, कुछ नए बदल, इसी तरह सेल जो हैं बॉडी के, वो टूटने शुरू होते हैं और एवरी डे ऐसा होता रहता है। और जब माँ से बाहर आया बच्चा, तो वो जो सेल थे ब्लड के, वो टूटने शुरू हुए तो उनमें आयरन की कहानी मैंने आपको बताई थी कि जब आयरन टूटता है, तो आयरन बिलीरुबिन, बिलीवर्डन में पहुंचता है। आंतड़ी से जितना खून इकट्ठा हुआ लिवर में गया, लिवर में ये जितना भी सारा था वो टूट गया। सभी चीज़ें टूट गई, आयरन भी टूट गया। उन सब की बातें अलग-अलग समय में हम बताते रहेंगे, बताई भी है, लेकिन आयरन की बात अभी ज़रूरी थी इसलिए नए जन्मे बच्चे में मैंने आपको बताया कि आयरन टूटता है तो इसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बनते हैं और ये वो हैं जो हमारी आँखों को, हमारी चमड़ी को, हमारे पेशाब को, हमारे टट्टी को रंगत देते हैं। और इनकी ज़्यादती हो गई तो रंग पीला हो जाएगा। ये नॉर्मल रहेंगे तो हमारी रंगत जो गुलाबी वगैरह हो जाएगी और ये कम रहेंगे तो उसी हिसाब से हमारे ये जो पेशाब है, ये जो आँखों का रंग है, ये जो चमड़ी का रंग है, ये बदल जाएगा। तो ये होता है ऐसा न्यूबॉर्न बेबी में, इसीलिए ही
सेल टूटते हैं, उतने बन नहीं रहे हैं और उतने उस तरह म्यार में पूरे नहीं। एक सिकल सेल एनीमिया की भी मैंने बात की थी कि सेल पूरे उस साइज़ के नहीं बन पाए, पूरी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं। उसके हिसाब से ये हालात इस तरह का होता है कि बच्चे को पीलिया हो ही जाता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि पैदा होते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको पीलिया है। और आमतौर पे तीसरे दिन, जन्म के तीसरे दिन आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि हैं, इसका रंग तो पीला-सा हो गया है, इसकी आँखें पीली-सी हो गई हैं। और इसका वही कारण है कि वो जो सेल टूट रहे हैं, वो जो आयरन टूट रहा है लिवर में जाके, एक्सेस में टूट रहा है, एक्सेस में वो जा रहा है और ब्लड में, इसीलिए हमारा रंग पीला हो गया, इसीलिए हमारी चमड़ी पीली हो गई। और अल्टीमेटली ये बॉडी नया जीवन जो है, ये लर्न कर जाता है, ये सीख जाता है कि नहीं, इस खुराक से ही हमें ये चीज़ बनानी है, हम बना लेंगे। वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे ये एक फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर है, मैंने कहा था कि ये एक फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर है। जैसे दिन होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, उसके बाद फिर आगे दिन होता है। ये एक रूटीन का फिज़ियोलॉजिकल चक्कर है, नेचुरल चक्कर है कि शरीर में वो सेल ज़्यादा टूटे, उतने अभी बने नहीं, इस शरीर ने इतना लर्न नहीं किया कि जो खुराक उसको दी जा रही है, उससे उतने सेल वो बना पाए, जितने सेल टूट रहे हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादा सेल टूटे, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन ज़्यादा बना, पीलिया हुआ और अल्टीमेटली बॉडी सीख गई कि इसी खुराक से जो मुझे फ़ॉर्मूला दिया जा रहा है या मुझे माँ का दूध दिया जा रहा है, अब पहले ब्लड था माँ का, अब माँ माँ का खून है, अब इससे खुद आपको सिंथेसाइज़ करना है सब जो चाहिए। तो इसकी वजह से वो लर्न कर जाता है, तो ये जो पीलिया है बच्चों का आमतौर पे 7वें दिन तक ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता तो 14 डेज़ तक हम देखते हैं और इसके समय में हम लोग उसको लाइट थेरेपी देते हैं, सन रेज़ में बिठाते हैं और बहुत से प्रिकॉशंस हैं हमारे पास जो आजकल इसके लिए करते हैं और ये ठीक हो जाता है। जानलेवा भी हो सकता है अगर हमने कोई इसका प्रिकॉशंस नहीं किया। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो नए बच्चे को पैदा होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लिवर की होती है। सो लिवर को कंट्रोल करने के लिए ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वायरस आ गया इसमें, तो उस वक़्त ये सीरियस भी हो सकता है। और उसको बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो विदिन 24 आवर, क्योंकि काम तो शुरू हो गया, आपने नाड़ू काटा, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी काटी, उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर आया, माँ से अलग हुआ और नया जीवन हुआ, काम तो उसी वक़्त शुरू हो गया। अगर बीमारी वो डिस्ट्रैक्शन जो सेल की तो हो ही रही थी, हो रही है। बढ़ने वाली बात अभी सीखी नहीं, क्योंकि बच्चा तकरीबन 17 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली फर्स्ट पेन के से लेकर डिलीवरी नाड़ू काटने तक अप्रॉक्सिमेटली ये एवरेज टाइम है कि 17 आवर तक एक बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिलती। और बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिलती तो एक तरह स्टार्वेशन की पोजीशन होती है। अब इससे आहिस्ता-आहिस्ता उसको संभलना है और इस लिहाज से वो पीलिया ज़्यादा दिखाई देता है, सेल ज़्यादा टूट रहे हैं, उतने बन नहीं रहे। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, शरीर सीख जाता है तो फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है, नहीं होता है तो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, देर-सवेर सीख जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी बीमारी आ जाएगी। हमारे घर में चौकीदार रखा होगा किसी कंपनी में, तो चौकीदार नहीं रहेगा तो जो मर्जी अंदर आ जाए। तो इसी हिसाब से उस उम्र में जो आने वाला है वो हेपेटाइटिस बी है, वायरस है। और वायरस से बचाने के लिए मेडिकल साइंस ने डेवलप किया हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, जो दिया जाता है विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। तो इसी तरह हम बात ये डिप्थीरिया की अभी करके हटे हैं कि डिप्थीरिया जो है वो सेकंड चीज़ है जो सीरियस हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, साँस से कंसर्न है और साँस नहीं आया 3 से 5 मिनट तक तो रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास बहुत सी मशीनरी है, आजकल मेडिकल साइंस ने डेवलप किया बहुत कुछ, बट इवन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट 3 टू 5, खास तौर पे बच्चों में। खासकर इलेक्ट्रिक शॉक या बहुत कुछ देते हैं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा किसी ने, कोशिश की जाती है कि रिवाइज हो जाते हैं, कई बार इम्बोलिज्म आ जाता है, कहीं से चलती-चलती कोई चीज़ कहीं जाके रुक जाती है। अब बरसात होती है ना, तो पहाड़ों से जड़ी-बूटियाँ कई तरह की पानी में बहकर दरियाओं में आ जाती है, जो हमारे मैदानों में पैदा नहीं होती।
इसी तरह ही किसी सट से, किसी चोट से, तो कांटा तो है ही, अपने अम्बिलिकल कॉर्ड तो काटी है। किसी भी जख्म से कोई भी क्लॉट ट्रैवल करता हुआ ब्लड में किसी जगह चला गया, उसने वहां पर उसको क्लॉट कर दिया, और उस लिहाज से कोई भी बीमारी जो है वो शुरू हो सकती है, ब्लॉकेज होगी साइड से। सो ये इम्बोलिज्म की, ये इस तरह की बातें मैं टाइम टू टाइम आप सब लोगों को बताता रहूंगा। आज का क्योंकि समय मेरा फिर ये समाप्त हो गया है कि डिप्थेरिया के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया। कल का लेक्चर स्टार्टिंग होगा 5 बजे, और 5 बजे हम सबसे पहला लेक्चर पंजाबी में देंगे, जो टेटनस के बारे में होगा। टेटनस क्या है, कैसे पैदा होती है, काजेटिव फैक्टर क्या है, सीरियस क्यों है, सिम्टम्स निशानियां इसकी क्या हैं, ये सब चीज़ें, इसकी कैटेगरी के टाइप्स किस किस टाइप की हो सकती हैं, ये सब चीज़ें, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ये डिटेल में जितना हो सकेगा कल पहला लेक्चर जो है, जिसमें रेडियो प्रवाज हमारे साथ जुड़ते हैं। रेडियो सबरंग तो आप सुन ही रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर आप सुन ही रहे हैं, ये लगातार चलते हैं। लेकिन अल्टरनेट डे रेडियो प्रवाज न्यू जर्सी से चलता है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो पंजाबी का लेक्चर डिलीवर करते हैं हमारा, और ठीक है, हम उनको भी देते हैं, ठीक है, जितना सुनना चाहते हैं सुन लें। उसके बाद मंडे को, एवरी मंडे को 3:35 से और 4:35 से पहले पंजाबी में, फिर हिंदी में मेरा लेक्चर शुरू होता है रेडियो पंजाब में। आप रेडियो पंजाब तो सभी सुनते ही हैं, और उसमें मेरी कोशिश रह जाती है कि हफ्ते भर में जो मैंने किया उस सारे को सिनॉप्सिस के तौर पे मैं रेडियो पंजाब सुनने वाले सभी श्रोता को पेश कर सकूं। बेशक थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं, ये तो कोई सिलेबस तो है नहीं और टाइम बाउंड भी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज का फाइनल का इम्तिहान देना है। लर्न करना है, सीखना है कि क्या क्या चीजें आ सकती है हमारे सामने और उसको कैसे ठीक करना है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं कहूँ वो आपके पल्ले पड़े, आप सब लोग जानें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन का आप बचाव कर सकें, आपका फायदा कर सकें। सो कल का लेक्चर 5 बजे आप सुनेंगे टेटनस के बारे में, और रेडियो प्रवाज उसमें होगा। उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो अंग्रेजी का लेक्चर होगा टेटनस के बारे में ही, और उसके बाद फिर आगे ऐसे ये प्रोग्राम एवरी डे चलता है, 5 से 6 एवरी डे मेरा लेक्चर होता है। सुनते रहिए। जो लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो जो लोग आप सुन रहे हैं और दूसरों को भी कहिए, अपने बहन भाई मित्र जो भी आपके हैं उन सबको बताएं कि वो भी ये लेक्चर सुने, पंजाबी में सुने, हिंदी में सुने, अंग्रेजी में सुने, ताकि जानकार हो जाए। बहुत सी चीजें आप डॉक्टरों पर डिपेंड करते हो, तो डॉक्टर तो हमेशा आपको अवेलेबल नहीं है ना। अगर आप जान जाएंगे तो ये साधारण चीज हो जाएगी, साधारण चीज हो जाएगी, और आप प्रिकॉशन कर पाएंगे, और प्रिकॉशन भी टाइमली कर पाएंगे। टाइमली अगर की चीज का प्रबंध हो जाए तो वो आसान हो जाता है। और समय बीत जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और सीरियस हो जाए तो बहुत सी और दुश्वारियां आ जाएंगी। तो इसलिए मेरा पर्पस इन चीज़ों को मुझे तकरीबन अब 30 साल होने लगे हैं यहाँ अमेरिका में लेक्चर करते हुए, बोलते पता नहीं कितने रेडियो स्टेशन, कितने टीवी स्टेशन, कितने सब जगह मैं बोलता आ रहा हूँ। और कोई भी रेडियो स्टेशन, कोई भी टीवी स्टेशन मुझे बोलता है लेक्चर देने के लिए, तो मैं उनको फ्री लेक्चर देता हूँ कि भाई ठीक है, मेरी कम्युनिटी को अवेयरनेस जानी होनी चाहिए कि हमारे शरीर के साथ संबंधित कौन कौन सी बीमारियां कब कब आ सकती हैं, और उनके पीछे कारण क्या है, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मेरा पर्पस है मेरे लाइफ का, और आप उसमें सहयोगी बने। आपका सहयोग सिर्फ इतना ही मुझे चाहिए कि आप और लोगों को बताएं, ताकि वो भी ये प्रोग्राम सुने और जानकार हो सके। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। साथ साथ हमेशा मैं यही कहता हूँ, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट या ऐसे प्रचार होता है, पैम्फलेट्स वगैरह मैं भेजता हूँ, वही सब होता है कि भाई जितनी भी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, वही देकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और सिर्फ इतना ख्याल रखें कि जो खर्चे वगैरह हैं निकल जाए, मुर्गी ना मरे, अंडा आप लेते रहो, आपका फ़ायदा हो सके। जितना भी मैं फ़ायदा कर सकूँ इस 75 साल की उम्र के, मैं करना चाहता हूँ।
आप इसमें सहयोग करें। अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।